Hello guys, welcome back to my channel. So today in this video I'm going to share these three most amazing yet very quick hairstyles for college. ये बहुत ही cute और बहुत ही quick hairstyle हैं, बहुत practical हैं, आप इन्हें अपने college time में carry कर सकते हैं and with a very amazing cutest college makeup. So I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Going to do our makeup first, but before that I'm just going to clean my face with the help of this toner. I'm going to use this gulab jal as a toner. आप कोई भी toner या गुलाब जल को भी आप use कर सकते हैं अपना face clean करने के लिए. Going to apply my Pond's BB cream treated just for ₹65. Then इस BB cream को मैं blend करूँगी अपने beauty blender से, एक damp beauty blender से. I'm just going to set my face with the help of my Lakme loose powder. इसकी मदद से मैं अपने फेस को सेट करूँगी and फेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है, so don't skip that step. मैं इस तरीके से इस लूज पाउडर को लूँगी इस ब्रश में and then just going to apply it under my eyes. We're going to do our eye makeup. उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फ्लफी ब्रश एंड इस पैलेट की मदद से. ये बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट है, सो आप इसको बहुत इजीली मार्केट में आपको मिल जाएगा. ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है. एंड इफ़ यू आर अ बिगनर स्टार्टिंग में मेकअप ट्राई कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ना यूज़ करो, बिकॉज यू आर अ बिगनर, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग. सो इसलिए स्टार्टिंग से इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया. सो इसलिए हम इस पैलेट को यूज़ कर रहे हैं एंड एक अफोर्डेबल पैलेट की मदद से भी हम काफ़ी अच्छे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं. अगर आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे मेरी काफ़ी सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं. सो इस पैलेट में से मैं ये वाला शेड अप्लाई करूँगी इस फ्लफी ब्रश में की मदद से. सो फर्स्ट वी गोइंग टू अप्लाई द लाइट शेड. हमको पहले लाइट शेड अप्लाई करने चाहिए, उसके बाद हमको धीरे धीरे अपने शेड्स को, आई शेडो के शेड्स को डार्क करना चाहिए. सो जैसे एज यू कैन सी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया. सो जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस फर्स्ट. एंड देन मैं इसी शेड को अपनी आईज के लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूंगी. Of my Incolor highlighter palette, I'm just going to pick this orange shade with the help of this flat brush and going to apply this on my eyelid area. And then from the same highlighter palette, I'm just going to pick this champagne shade and apply it on my inner corners of eyes. To draw a very cute wing liner. मैं ज़्यादा dramatic liner draw नहीं करूँगी, but I'm going to draw a wing. And then after that, I'm just going to apply my mascara. After that, we're just going to remove the excess. Okay, so by picking up this darker shade from this angle brush, I'm just going to, fill in my eyebrows. My face with the help of my Swiss Beauty Baked Brusher and a highlighter palette.
After that, I'm just going to apply my lipstick as my blush. I'm just going to apply this lipstick on my lips. To highlight my face. Makeup is done, so we're going to see that how we can tie this very simple cute ribbon on our head in a very practical way, बहुत ही practical तरीके से. ओके सो फर्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू वेयर इट जस्ट लाइक अ हेयर बैंड. इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से जस्ट एक हेयर बैंड की तरीके से वेयर करूँगी. एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू मेक अ लो पोनी टेल. मैं अपने बालों को सबसे पहले एक रबर से टाई करूँगी, लो पोनी टेल बनाऊँगी एंड देन इसको उस रबर के अराउंड इस तरीके से रैप करूँगी. एंड ये बहुत ही क्यूट और बहुत ही ज़्यादा प्यारा हेयर स्टाइल लगता है. व्हेन इट कम्स टू कॉलेज ये बहुत ही क्विक है. सो इट इज़ स्टाइलिश एज वेल एज़ वेरी क्विक एट द सेम टाइम. एंड देन मैं एक हाई पोनी बनाऊंगी, एक बहुत ही मेसी सी हाई पोनी. उसमें आगे के थोड़े से फ्लिक्स अपने बालों के छोड़ूंगी एंड देन इसको अपनी रबर पे टाई करूँगी. सो दीज आर ऑल 3 हेयर स्टाइल एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट विद दिस टी. सो आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस वन. ओके सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये तीनों हेयर स्टाइल्स बहुत पसंद आई होंगे एंड ये मेकअप भी बहुत अच्छा लगा होगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब. टिल देन बाय.